Exercise number 1.5, class 9. Find the determinant of the following matrices and evaluate them. So, first part of this question is A is equal to 5, 6, minus 4 and 1. We have to find the determinant. For determinant, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ हो, let's suppose A, और इसमें एलिमेंट्स हो A, B, C and D, and you are going to find the determinant of this matrix. So you have to write in this form: A, B, C and D. You have to multiply A with D minus C and to B. तो ये आपके पास उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा. ठीक है, तो चलिए फाइंड करते हैं सॉल्यूशन. A determinant will be equal to determinant of the matrix 5, 6, minus 4 and 1. Now you have to multiply cross diagonal elements 5 into 1 minus 6 into minus 4, that is 5 ones are 5, minus minus plus 6 fours are 24, so it will become 29. ये आपका determinant of A है. Now second part of this question, that is B is equal to 4 minus 2, 5 and 13. कीप इन माइंड, ये जो तरीका हम यूज़ करते हैं, ये जो मेथड हम अप्लाई करते हैं, ये सिर्फ हमारे पास 2x2 मैट्रिसेस के लिए होता है. जो 3x3 होते हैं या इससे ज़्यादा वाले, उनके लिए दूसरा तरीका फिर इस्तेमाल करते हैं. वो भी इन क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो फाइंड करेंगे. ठीक है, तो B डिटरमिनेंट विल बी इक्वल टू 4 minus 2, 5 and 13. 4 into 13 minus minus 2 into 5. 13 fours are 52, minus minus plus 5 twos are 10, so it will become 62. Third number part हमारे पास क्वेश्चन 1 का है, find the determinant of C, where C is this one. So solution, C is equal to 11, 7, minus 6 and 5. Now 11 into 5 minus 7 into 6 minus 6. 11 5s are 55, minus minus plus 42, 97. Now solution, D determinant will be equal to, this is fourth number part, 5, 6 minus 8 minus 9. So 5 into minus 9 minus minus 8 into 6. अब ये दोनों मतलब एक्सचेंज कर सकते हैं. अगर आप 8 को 6 से मल्टीप्लाई करें या 6 को 8 से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. सो इट इज़ minus 9 5s are 45 and minus minus plus 48. So it will give us 3. Now solution of this will be equal to, E determinant will be equal to 2p minus 3q r minus s. So 2p into minus s minus 3q into r. So this will give you minus 2ps minus minus plus 3qr. अगर आप रीअरेंज करना चाहें तो ये 3qr माइनस 2ps बन जाएगा. 3x3 मैट्रिक्स दिया हुआ है. पार्ट नंबर 6 में आपने इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है. तो हमारे पास F इज़ इक्वल टू सॉल्यूशन, डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1. 3x3 मैट्रिक्स में आपने मल्टीप्लिकेशन जो करनी होती है, जो डिटरमिनेंट फाइंड करना होता है, वो इस तरह है कि आपने जो यहाँ पर एलिमेंट लिखा हुआ होगा
द फर्स्ट एलिमेंट यू हैव राइट लाइक दिस, एनी एलिमेंट, यहाँ पर 1 है तो हमने 1 लिख दिया। तो जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हैं वो आपने रिमूव करने हैं इस मैट्रिक्स से। अगर हम इस तरह करें ये वाला और ये वाला, तो हमारे पास रह जाएगा 1 0 0 1। नाउ अब हमारे पास इस डिजिट का नंबर है, तो हम इस तरह करेंगे, यहाँ पे माइनस पुट करेंगे कि आपने ये जहन में रखना है कि यहाँ पर जो दरमियान वाला हमारे पास फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट होगा वो आपने यहाँ पर माइनस ही पुट करना है। यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर हमने 0 पुट कर दिया। अब ये रिमूव करेंगे ये वाला और ये वाला, तो हमारे पास रह जाएगा 0 0 0 1 0 0 0 1। नाउ अब इसका नंबर है तो हम लिखेंगे +0। अब ये रिमूव करेंगे ये वाला और ये वाला, फर्स्ट रो सबके साथ फर्स्ट रो ही रिमूव होगा और बेतरतीब हमारे पास फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। नाउ थर्ड कॉलम, सो दिस विल बिकम 0 1 0 0 0 1 0 0। नाउ अब हमारे पास 2 by 2 ये वाला भी है, ये वाला भी है, आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो 1 and 2 1 into 1 minus 0 into 0 minus 0 0 into 1 minus 0 into 0 plus 0 0 into 0 minus 1 into 0। 1 1s are 1, 1 minus 0 आ जाएगा, माइनस ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इनको एड सब्ट्रैक्ट करेंगे वो तो है ही, लेकिन यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई है तो 0 मल्टीप्लाई करते हैं तो सारा टर्म 0 हो जाता है। इसी तरह +0, तो हमारे पास 1 into 1 से 0 माइनस करें तो 1 आएगा और ये हमारे पास आएगा 1 1s are 1, तो इसका डिटरमिनेंट होगा हमारे पास 1। Part number 7, that is g is equal to this one. Find the determinant of g. So solution, g determinant will be equal to 1 2 2 3 2 3 and -2 -3 4। वही मेथड है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम ये रिमूव करेंगे बिल्कुल इस तरह, ठीक है। तो हमारे पास रह जाएगा 2 3 और -3 4। सो 1 हमारे पास 2 3 -3 4। नाउ अब इसका नंबर है इस तरह बिल्कुल करेंगे, ठीक है। ये रिमूव होगा और ये, तो जो मैट्रिक्स रह जाएगा वो आपने लिखना है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर 2 है तो हम जो मिड का कॉलम होता है उसके नंबर के साथ हम माइनस लगाते हैं, तो ये माइनस हो गया और वही रिमूव करेंगे तो 3 3 -2 4 रह जाएगा। 3 3 -2 and 4। अब लास्ट वन -2 हमारे पास है तो ये रिमूव होगा, ठीक है, और ये रिमूव होगा। तो यहाँ पर आपने कीप इन माइंड प्लस पुट करना है, ठीक है। तो ये और ये, तो हमारे पास रह जाएगा 3 2 -2 -3, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 2 into 4 minus 3 into -3 -2 into 3 and 4 -3 into -2। Now +2 3 into -3 and -2 into -2 1 4 2s are 8 minus minus plus 3 3s are 9 -2 3 4s are 12 plus 3 2s are 6 plus 2 minus 9 3 3s are 9 minus minus plus 2 2s are 4। Now 1 into 17 minus 2 into 18 plus 2 into -5 71 over 17 minus 36 minus 10, it will give us, this is -36 minus 10 तो -46 आ जाएगा।
और प्लस 17, तो दिस गिव अस -29. Part number 8, h is equal to this one, so find the determinant of h. So put a 0 0 0 b 0 and 0 0 c. Okay, so in the same way जो फर्स्ट एलिमेंट है a, वो हमारे पास ये और ये रिमूव हो जाएंगे. ठीक है, तो b 0 0 c रह जाएगा. नाउ अब -0 है तो -0 पुट करेंगे और ये रिमूव होगा और फर्स्ट रो रिमूव होगी, तो 0 0 0 c 0 0 0 c. अब +0, तो यहाँ पर ये रिमूव होंगे और ये, तो 0 b 0 0 0 b 0 0. ठीक है, तो ये a b इंटू c -0 इंटू 0 -0 इंटू 0 इंटू c -0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 इंटू 0 माइनस b इंटू 0. ठीक है, तो ये a बी सी -0 0 आ जाएगा, तो बस बी सी ही रह जाएगा. अब ये वाले टर्म को देखें, ये हमारे पास 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0, ये भी 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0. नाउ दिस विल बिकम a b c. सो डिटरमिनेंट ऑफ h विल बी इक्वल टू a b c. Question number 2, exercise 1.5, that is find which of the following are singular and which are non-singular. तो singularity और non-singularity के लिए हमें ये करना होता है. Let's suppose we have a matrix A that is contain any element 1 2 3 and 4. Okay, अगर हम इसका determinant find करें, if we find the determinant और वो हमें 0 दे, ठीक है, determinant हम find करें और वो हमें 0 वैल्यू दे, तो ये हमारे पास होगा सिंगुलर मैट्रिक्स. ओके, और अगर वो हम फाइंड करें डिटरमिनेंट और वो 0 के बराबर ना हो, डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास होगा नॉन सिंगुलर. ठीक है, तो चले एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट नंबर फर्स्ट हमारे पास a इज इक्वल टू 5 3 2 1. हमें चेक करना है कि ये सिंगुलर है या नहीं, तो हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना होगा. तो डिटरमिनेंट हमारे पास बराबर होता है 5 3 2 1 के. So 5 into 1 minus 3 into 2. 5 ones are 5 minus 3 twos are 6. This will equal to -1, which is does not equal to 0. So A is non-singular. Okay. B की तरफ आते हैं. B determinant will be equal to 3 minus 6 minus 2 and 4. So 3 into 4 minus 6 into -2. 3 fours are 12. Minus plus and plus minus 3. There are 3 times negative. So 3 times negative we multiplied. So it will give us minus value. 6 twos are 12. So it gave us 0. So it's mean. So B is a singular matrix. Third number part, C is equal to this one. हमें find करना है what either this is singular or not. So C determinant is equal to 3a minus 2b and 2a into b. Okay, so 3a into b, 3a into b minus 2b into 2a. This will give us 3ab and minus plus 2 twos are 4ab. So it will give us 7ab, which does not equal to 0. So C is non-singular. Determinant of D will be equal to -3, 6, 2 and -4. So
minus 3 into minus 4 minus 2 into 6. So minus minus plus 3 4s are 12, minus 6 2s are 12. So it gave us a 0. So D is a singular matrix. Question number 3, find the adjoint of the following matrices. So adjoint के लिए हमारे पास है कि let's suppose we have a matrix A that is containing A, B, C and D. तो adjoint आपने इस तरह लेना है कि जो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर जो एलिमेंट हैं A और D उनको आपने इंटरचेंज करना है, मतलब D यहाँ पर आएगा और A यहाँ पर, और C और B के जो साइन हैं पॉजिटिव हो नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव में। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दोनों पॉजिटिव हैं तो यहाँ हम दोनों नेगेटिव में कन्वर्ट करें, ये हमारे पास एडजॉइंट आ जाएगा। तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो करते हैं, आपको समझ आ जाएगी। फर्स्ट पार्ट A is equal to 1 2 3 4. So adjoint solution, adjoint of A will be equal to 4 1, इंटरचेंज कर लें और इन दोनों का साइन अपोजिट कर लें, ठीक है। ये हमारे पास नाउ एडजॉइंट ऑफ B विल बी इक्वल टू 3, वहाँ पर चला जाएगा, ये 3 नीचे आ जाएगा, इसका साइन नेगेटिव है वो पॉजिटिव 1 बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ B हो गया। इसी तरह एडजॉइंट ऑफ C विल बी इक्वल टू 1 2 रिप्लेस एंड -4 +4 और ये -3। लास्ट जो पार्ट है इसका वो 4 नंबर D इज इक्वल टू हमारे पास है -3 6 2 एंड -4। सो adjoint of A will be equal to 4 1, ये इंटरचेंज कर ले एक दूसरे के साथ, 4 1 आ जाएगा और ये -2 -3 बन जाएगा, तो ये हमारे पास है adjoint of A। इन द सेम वे adjoint of B will be equal to 3 यहाँ पर आ जाएगा, -3 यहाँ पर, और इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये +1 बन जाएगा, ये -2। पार्ट डी, थर्ड नंबर पार्ट जो है इसका D C is equal to 2 -4 3 and 1. So adjoint of C will be equal to 1 2 +4 -3। ये दोनों इंटरचेंज हो गए, यहाँ पे साइन चेंज हो गए इनके। इस तरह हमारे पास जो D फोर्थ नंबर पार्ट है D, दैट इज -3 6 2 -4। सो एडजॉइंट ऑफ D will be equal to, इंटरचेंज हो जाएंगे, -4 3 और इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा -2। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पार्ट नंबर फर्स्ट, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इफ दे एग्जिस्ट। कंडीशन लगी हुई है, अगर मुमकिन हो तो आप मालूम करें, मतलब सबसे चले स्टार्ट करते हैं। तो फिर पार्ट फर्स्ट है हमारे पास, वी हैव टू फाइंड A इनवर्स, ओके। सो सॉल्यूशन, A इनवर्स इज इक्वल टू 1 over determinant of A into adjoint of A। अब एग्जिस्ट करता है या नहीं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो वो हमें डिटर्मिनेंट से पता चलेगा। अगर डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 के बराबर आ गया तो मैट्रिक्स का जो है वो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट होगा, ठीक है। इफ इट डज नॉट इक्वल टू 0, कोई वैल्यू आ गई तो फिर एग्जिस्ट होगा और फिर हम ए इनवर्स फाइंड कर सकेंगे। तो सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा इनवर्स मालूम करने के लिए। सो स्टार्ट करते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर A। सो A डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू 4 1 3 1, ओके। सो 4 into 1 -3 into 1, so 4 1s are 4 -3 1s are 3 is equal to 1। So 1 does not equal to 0,
So A inverse exists. Now we have to find adjoint. Adjoint of A will be equal to, इंटरचेंज दिस टू 1 4 आ जाएगा और इसका जो साइन है वो चेंज करें -1 -3. ठीक है, तो अब पुट दीज टू वैल्यूज 1 and this one in equation A, so we get A inverse will be equal to 1/1. डिटरमिनेंट हमारे पास 1 आया हुआ है और जो एडजॉइंट है वो 1 -1 -3 and 4 है. तो मल्टीप्लाई करेंगे तो A इनवर्स आ जाएगा हमारे पास 1 -1 -3 and 4. This one will answer. Part number second, B is equal to 3 4 1 2. B inverse, find B inverse. So solution is B inverse is equal to one word determinant of B into adjoint of B. So first we have to find determinant because we have to check either this is exist or not. So 3 4 1 2, 3 into 2 minus 4 into 1, 3 2s are 6 minus 4 is equal to 2, which is does not equal to 0. So we can find the B inverse. So B adjoint of B will become 2 and 3, and this will be minus 4 minus 1. Okay, so 3 2 और ये दोनों साइन चेंज होंगे तो नाउ B inverse will be equal to 1/2 2 minus 4 minus 1 and 3. अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं तो नहीं. तो हर एलिमेंट के साथ इसको मल्टीप्लाई करें 1/2 and minus 4 into 1/2, and this will be equal to minus 1 into 1/2, and this will be equal to 3 into 1/2. तो ये हमें वैल्यू देगा 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, 1 2 2s are 4 आ जाएगा, -2, this is minus 1/2 and this is 3/2. This will be the answer. We have to find C inverse. So solution, C inverse is equal to one word determinant of C into adjoint of C. So determinant of C will be equal to equation number A. So 4 minus 3 minus 1 and 2, 4 into 2 minus 3 into minus 1, 4 2s are 8 minus minus minus, so minus आ जाएगा, 3 1s are 3 is equal to 5, which does not equal to 0. So A inverse exists, C inverse exists. Now adjoint of C will be equal to, दोनों का प्लेस चेंज कर लें, 2 4 आ जाएगा और ये +3 +1 आ जाएगा. C inverse is equal to one word determinant of C हमारे पास 5 आया हुआ है, 1 4 आ जाएगा. ठीक है, ये आपका आंसर है. Part number 4, D is equal to 0 minus 3 2 4, and D we have to find D inverse. So for D inverse, one word determinant of D into adjoint of D. So first of all we have to find the determinant, either this is exist or not. So determinant will be equal to 0 into 4 minus 2 into -3. So A inverse exists. And now adjoint of D will be equal to, change this place 4 0 and change the sign, +3 4 3 -2 0. ये आंसर भी हो सकता है. बस सिंप्लीफाई करना चाहें थोड़ा बहुत तो वो भी कर सकते हैं. ये हमारे पास आ जाएगा 4 into -1/6, 3 into -1/6, and this is -2 into -1/6,
and 0 into minus 1 by 6. तो 2 3s are 6, 2 2s are 4, 3 2s are 6 or 2 3s are 6. So this will become minus 2 by 3 minus 1 by 2 plus 1 by 3, and this will become 0. Okay, so ये भी आंसर हो सकता है. Part number 5, that is I is equal to 1001, and we have to find I inverse. So solution, that is I inverse will be equal to one word determinant of I and adjoint of I. Okay, so determinant of I will be equal to 1001. So 1 ones are minus 0 into 0 does not equal to 0. So I inverse is exist. Now adjoint of I will be equal to 1 1 माइनस, अगर इसके साथ हम लिख लें तो भी ये मतलब ज़ीरो ना इधर पॉजिटिव ना नेगेटिव, इसलिए हम साइन बिल्कुल नहीं लिखते. तो आई इनवर्स होगा हमारे पास 1/1 इंटू एडजॉइंट ऑफ आई 1001. तो ये हमारे पास वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा. इसका मतलब है आई इनवर्स इज इक्वल टू आई, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर हम इसका इनवर्स भी ले लें तो वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स. Question number 5, if A is equal to this one, B is equal to this one, find AB, BA, A inverse and B inverse. और इसी तरह हमारे पास और भी पार्ट्स दिए हुए हैं जो पहले हम ये फाइंड करेंगे पर उसके बाद उसकी तरफ आएंगे. सो क्वेश्चन आपने जिस तरह हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे आपने उसके साथ साथ ही क्वेश्चन लिखना है, क्योंकि बाद में जो स्टेप हैं वो हमसे रह जाएंगे. सो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं AB. सोल्यूशन AB, इनका मल्टीप्लिकेशन है 2 0 - 3 1, and ये हमारे पास है B is equal to 1 - 1 - 1 into 3. So this will become first row first column. So 2 1s are 2. डायरेक्ट स्टेप है, इसमें हम जस्ट एडिशन ही करेंगे, मल्टीप्लिकेशन इस तरह करेंगे. 2 1s are 2 तो 2 आ जाएगा, प्लस 0 1s are 0, सो हमारे पास यहाँ से 0 आ जाएगा. नाउ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, सो 2 1s are 2 -2 आ जाएगा, एंड 3 0s are 0, सो प्लस 0 आ जाएगा. नाउ -3 इंटू 1, सो -3 आ जाएगा. 1 इंटू -1 तो -1 आ जाएगा. इस तरह -3 इंटू -1, सो +3, and this will become 1 into 3, so +3. This will give us a matrix of 2 -2 -4 and 6. Okay, so this is फर्स्ट नंबर, ये अपने साथ आपने नोट करना है. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड बी ए. सो बी ए इज इक्वल टू, फर्स्ट यू हैव ड्रॉ मैट्रिक्स बी, दिस इज -1 -1 3, एंड द सेकंड वन इज 2 0 -3 and 1. As these are 2 by 2 matrices, so multiplication is possible. These are 2 by 2 matrices, so multiplication is possible. Now we are going to multiply these two. So 1 into 2, first row first column, 1 into 2 2 -1 into -3, so +3 आ जाएगा इससे. Now 1 into 0 0, and -1 into -1 into 1, so -1 आ जाएगा इससे. Now -1 into 2, so -2, and 3 3s are 9, so -9 आ जाएगा. ठीक है, so -1 into 0 0, and 3 into 1, so +3. It will give us a matrix of 5 -1 -11 and 3. Now we are going to find third number part. This is first part, this is second. Now third part is A inverse. So A inverse is equal to one word determinant of A into adjoint of A. So determinant find करना है हमें A का, तो A का determinant हमारे पास आ जाएगा 2 0 -3 into 1. So this will 2 1s are 2 minus 0 3s are 0, 0 ले लेते हैं, तो हमारे पास 2 है which does not equal to 0, so A inverse exist है. Now adjoint of A will be equal to, this is 1, ये दोनों रिप्लेस हो जाएंगे एक दूसरे के साथ 1 2, और इनका साइन चेंज हो जाएगा, सो ये +3 बन जाएगा. ठीक है, 0 का साइन वही रहने दें क्योंकि 0 ना इधर पॉजिटिव ना नेगेटिव. सो A inverse is equal to
one word determinant of A, that is 2, and 1 0 3 2. This one is third. Now we are going to find B inverse, which is the fourth part. One word determinant of B into adjoint of B. So determinant of B is equal to 1 minus 1 minus 1 3. 3 ones are 3 minus 1 plus 1, so plus 1 आ जाएगा. So ये भी हमारे पास 2 के बराबर होगा, does not equal to 0. So B inverse is exist now. Adjoint of B will be equal to that is 3 1. इनका प्लेस चेंज कर लें और इनका साइन चेंज कर लें. ठीक है, तो हमारे पास B inverse will be equal to 1 over 2 into 3 1 1 1. ये हमारे पास 4 नंबर आ गए. अब इनको 1 2 3 4 को आप अपने पास लिख लें, नोट कर लें, तो जो नेक्स्ट पार्ट है उनमें ये काम आएंगे. ठीक है, ए बी होल इनवर्स हमें मालूम करना है, शो करना है कि ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स. आपने आर्डर चेंज नहीं करना क्योंकि फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है, इसलिए ए बी होल इनवर्स हमें फाइंड करना है पहले. तो ए बी होल इनवर्स हमारे पास बराबर होगा 1 ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए बी एडजॉइंट ऑफ ए बी. ठीक है, सो सबसे पहले डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं. तो ए बी ऑलरेडी जो मैट्रिक्स हमने पहले से फाइंड किया हुआ है वो आप लिख लें. दैट इज़ 2 minus 2 minus 4 6 will give us 2 6 are 12 minus minus plus 4 2s are 8, so it will give us 4. Does not equal to 0. हमारे पास ए बी इनवर्स होल इनवर्स एग्जिस्ट है. नाउ एडजॉइंट ऑफ ए बी, that is matrix B AB is this one. So 6 and 2, this will become 6 and 2, and both sides will be sign will be positive. So AB whole inverse will be equal to 1 over 4, and that is 6 2 4 2. This one is 1. Now right hand side, for right hand side we have to multiply B inverse and A inverse, which is matrix B is 3 1 1 1, and matrix A is 1 over 2 into 1 0 3 2. That is 1 over 4 1 over 2 1 over 2 1 over 4 आ जाएगा. And first row first column, so 3 into 1 3 and 1 into 3 3, so 3 plus 3. This is 3 into 0 0 plus 2 ones are 2 2 ones are 2, and 1 into 1 1 plus 3 ones are 3, and 1 into 0 0 plus 2 ones are 2. That is 1 over 4, and it will become 6 2 4 2 is equal to, yeah, this one is second. So from 1 and 2, it is clear that showed that AB whole inverse is equal to B inverse and A inverse. सेकंड पार्ट है इसका, बी ए होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स एंड बी इनवर्स. हमें फाइंड करना है बी ए होल इनवर्स. सो दैट इज इक्वल टू 1 ओवर बी ए डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए बी, सॉरी, एडजॉइंट ऑफ बी ए. सो बी ए हमारे पास पहले डिटरमिनेंट हमें फाइंड करना है. बी ए डिटरमिनेंट विल बी इक्वल टू, ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं बी ए. यहाँ पे लिख लें 5 into 3 minus 5 3s are 15, 11 1s are 11, minus 3 times minus give us minus, so ये हमारे पास 4 आ जाएगा. So determinant is equal to, so now B adjoint of B will be equal to BA. That is, change the place of these two, so 3 5 and sign of these two, that's 11. So BA whole inverse will be equal to 1 over 4, that is determinant of BA, and this one is 3 1 11 5. Remember first. Now we have already this one
A inverse and B inverse, and here is the right hand side. So right hand side will be equal to, first you have right A inverse and then B inverse, that is equal to A inverse is 1 over 2 1 0 3 2, and this is 1 over 2 3 1 1 1. So it will give us 1 by 4, 1 by 2 1 by 2 1 by 4, and 1 3s are 3, 1 zeros are 0, so plus 0, and 1 1s are 1, 1 zeros are 0, plus 3 3s are 9, 2 1s are 2, 9 11, इस तरह लिखते हैं 9 plus 2, and this is 3 1s are 3, 2 1s are 2, so 1 over 4 3 1 11 5. So from 1 and 2 both are same, so b a whole inverse is equal to A inverse and B inverse. Question number 6. If A is equal to this one, B is equal to this one, then show that AB whole inverse is equal to B inverse and inverse, and A whole inverse is equal to A inverse and B inverse. So इनके लिए हमें सबसे पहले फाइंड करना होगा, हमारे पास AB होना चाहिए, BA होना चाहिए, A इन्वर्स होना चाहिए एंड B इन्वर्स होना चाहिए, तभी हम इनको फाइंड कर सकेंगे। अभी सबसे पहले हमें ये चीज़ें फाइंड करनी होंगी। तो हमारे पास ए बी सोल्यूशन, ए बी विल बी इक्वल टू मैट्रिक्स ए इज़ 0 - 1 2 1 एंड B इज़ इक्वल टू 3 1 0. मल्टीप्लाई दिस टू, 0 2s are 0, 1 1s are -1 -1, 0 3s are 0, 1 0s are 0, 2 2s are 4, 1 1s are 1, so plus 1, 2 3s are 6, 1 zeros are 0. It will give us -1 0 5 and 6. This is 1. Now we have to find BA. 2 3 1 0 and 0 -1 2 1. Zeros are 0. Okay. 2 zeros are 0 plus 2 zeros are 0, 3 2s are 6, 2 1s are -2, 3 1s are 3, 1 zeros are 0, 2 zeros are 0, 1 1s are 1 -1, 0 1s are 0, 6 1 0 -1. ये हमारे पास सेकंड पार्ट आ गया। आपने 1 2 इन सबको अपने साथ लिख देना है, नोट करना है। अब हम फाइंड करते हैं A इनवर्स, दैट इज इक्वल टू 1 over determinant of A into adjoint of A. So determinant of A will be equal to, यह मैट्रिक्स है हमारे पास 0 -1 2 1, तो यह बराबर होगा 1 zeros are 0 minus into -1 into, सो माइनस माइनस प्लस, और ये हमारे पास 2 आ जाएगा, तो हमारे पास डज नॉट इक्वल टू 0, सो हम फाइंड कर सकते हैं। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू, इन दोनों का प्लेस चेंज कर लें 1 0, और इन दोनों का साइन, तो ये +1 -2 बन जाएगा। नाउ ए इनवर्स विल बी इक्वल टू 1 over 2 into 1 1 -2 0, थर्ड है। नाउ बी इनवर्स हमें फाइंड करना है, बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 over determinant of B and adjoint of B. So determinant of B will be equal to, B matrix है 2 3 1 0, that is 2 zeros are 0 minus 3 into 1, so 0 -3 आ जाएगा and it will become -3, ठीक है। So ये हमारे पास
एडजॉइंट ऑफ बी अब फाइंड करना है। एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास बराबर होगा 0 2 के एंड -3 -1 के। So B inverse will be equal to 1 over -3. So 0 -3 -1 into this one is fourth number. ये भी आपने साथ नोट करना है। सारी मैट्रिसेस हमने फाइंड कर ली जो हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगी ए बी होल इनवर्स। अब हम फाइंड करेंगे फर्स्ट पार्ट। सो ए बी होल इनवर्स is equal to B inverse into A inverse. So taking left hand side, that is A B whole inverse is equal to 1 over A B determinant and adjoint of A B. So A B determinant will be equal to A B हमने already find किया हुआ है, नंबर 1 -1 0 5 और 6 के बराबर होगा। अब -1 into 6 -0 into 5 -6 आ जाएगा, -0 तो -6 डज नॉट इक्वल टू 0। सो हम फाइंड कर सकते हैं नाउ एडजॉइंट ऑफ ए बी, दैट इज change the place of this one 6 and -1 and 0 -5 आ जाएगा। So AB whole inverse is equal to 1 over -6, so it becomes 6 0 -5 -1. Okay, now right hand side, that is equal to that is equal to B inverse into A inverse. So first we have to write B inverse and then A inverse, that is equal to B inverse is 1 over -3 and this matrix is 0 -3 -1 2 and this is 1 over 2 and the matrix is 1 1 -2 and 0. So this will become 1 over -6, 2 3 is 6 and multiply these two, 0 1s are 0 0 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो प्लस 3 2 ज़ार 6 आ जाएगा। नाउ 0 1 ज़ार 0 और 3 0 ज़ार 0। नाउ दिस वन -1 into 1 -1 और -4 आ जाएगा, -1 into -1 -1 और +0। So this will become -1 over 6 and 6 0 -5 -1. This one is 1, this is 2. So from 1 and 2 it is clear that A B whole inverse is equal to B inverse into A inverse. Now second part is B A whole inverse. We have to show that this is equal to A inverse and B inverse. Solution, taking left hand side, B A whole inverse is equal to 1 over determinant of BA and adjoint of BA. Okay, so BA determinant matrix BA is 6 1 0 -1, so it will become 6 into -1 -1 into 0, -6 -0 is equal to -6. Now adjoint of BA, that is change the place of these two, -1 and 6 and sign of these two 0. Okay, so BA whole inverse will be equal to 1 over -6 and -1 -1 0 6. This is first part. Now we have to take right hand side, that is equal to A inverse B inverse. So first you have to write A inverse, that is 1 over 2 1 1 -2 0 and this is -1 over 3 and 0 -3 -1 2. So it will give 1 over 3 1 over 2 -1 over 6 and this is 1 zeros are 0 plus 1 ones are 1, so -1 निकलेंगे यहाँ पे। Now 1 3s are 3 -3, 1 2s are 2, so +2, 2 zeros are 0 0 and 1 zeros are 0, so +0 लेके -0 लेके कोई फर्क नहीं पड़ता। Minus minus plus 6, 2 3s are 6 and 0 2s are 0, so it will give us -1 over 6 -1 -1 0 and 6, so this is 2. So from 1 and 2
it is showed that BA whole inverse is equal to A inverse and B inverse.